Good morning, everyone. Now, in the statistics, we have seen method of questionnaire in the previous video, right? Method of questionnaire means we prepare questions related to our topic, what data we want to collect. We frame questions according to that. We provide options for that, and they select their answers, right? So that is called as questionnaire method. Now there are two types of questionnaire method: questionnaire by post and questionnaire by enumerator. Means questionnaire by post means the place if the place which to be visited for the data collection, if it is so far from our place, then we send our questionnaire by post to the respondents fill that questionnaire and send it back to us. That is called as questionnaire by post. Now see meaning: after preparing an ideal questionnaire, it is dispatched by the post to respondents from whom the information is to be collected, along with the request to complete the return and return it in a given time period. Therefore, it is necessary to send a blank envelope along with the questionnaire to all the respondents bearing the address of investigator and a प्रॉपर पोस्टल स्टैम्प. मतलब क्वेश्चनायर अगर प्लेस वो विजिटिंग वाला प्लेस अगर दूर है तो हम ये क्वेश्चनायर बाय पोस्ट सेंड करके वो उसके साथ हम एक ब्लैंक एनवलप भी देंगे, साथ में एक पोस्टल स्टैम्प भी भेजेंगे ताकि, और एक ब्लैंक शीट भी भेजेंगे ताकि वो अपने आंसर्स उसमें लिख के या वही क्वेश्चनायर फिलअप करके वो दूसरे वाले एनवलप में हमें सेंड बैक करे, राइट. सो दैट इज़ क्वेश्चनायर बाय पोस्ट. Now see in this. Nowadays questionnaire may be sent through computer, email and mobile phones. Nowadays digitalization is there, so now we can send our questionnaire through digital media also. Now what are the advantages? This method of collecting data is quite useful when the field of investigation is very vast. मतलब हमें जो इंक्वायरी करनी है, अगर वो फील्ड वो प्लेस पे बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स है, इन दैट केस वी कैन यूज़ दिस मेथड. कि अगर 1000 पीपल है, वी कैन नॉट बी एबल टू विजिट ऑल द 1000 पीपल एट अ टाइम, सो वी सेंड क्वेश्चनर एंड वी कैन गेट डेटा थ्रू देम at a time also. So this is a very easy and convenient method. This method is simple and it provides large amount of information, very less expense. This is very useful method having less expense. By this method, investigator can get information from respondents of other areas where it might to be difficult to reach personally or by telephone. Now this method is also useful where we cannot be able to reach personally and we cannot be ask them on phone also. So in that case this method is useful. Now what are the disadvantages? When respondents are illiterate or non-cooperative, this method becomes useless. अगर वो अनपढ़ है, if he is illiterate, then this method is useless. Sometimes information provided by the respondents may not be correct or may return incomplete or blank questionnaire to the investigator. Now if sometimes respondents does not understand any question properly, he left that question, right? He leave that question to answer, so or he give incorrect answer. So in that case also this method is not so usable. There may be a loss of questionnaire or delay in getting the information because of the laziness of the respondents. If some respondent is lazy, he is not sending our questionnaire on time, in that case also laziness also affects this method. There is a lack of assistance or a person who clarifies the instructions or gives explanation of the question that may arise. Hence there is a possibility of misinterpretations of questions. रिस्पॉन्डेंट समटाइम क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, सामने वो क्लैरिफाई भी करता है कि मेरा ये क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है, बट इन द क्वेश्चनर मेथड क्वेश्चन का अगर क्लैरिफिकेशन नहीं हो, रिस्पॉन्डेंट उसका मिस इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है
और आंसर नहीं भी दे सकता है या गलत आंसर भी दे सकता है. In that case we cannot get correct data, right? So there are the advantages and disadvantages of the questionnaire by post. Now questionnaire by enumerator. Now questionnaire by enumerator means enumerator himself goes to the place. Questionnaire himself visit the place and ask the data to the respondents and collect the data. Now see, in this method enumerators themselves contact the respondents and get response to the questionnaire or questions. Enumerator himself is the questionnaire. Thus the difference between the earlier method and this method is that in earlier method the questionnaire is sent to the respondents by post, whereas in this method the enumerator carry the questionnaires and personally meet the respondents. Here the enumerator should be enthusiastic, polite, honest and efficient in their work so that they can extract correct answer to the questions by providing relevant and supplementary information to the respondents. Abhi, now see in this questionnaire by enumerators that एन्यूमरेटर खुद ही जाएगा क्वेश्चनर लेके, क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेगा, समझाएगा और खुद जो आंसर वो देंगे वो खुद भरेगा, उनसे नहीं भरवाएगा. अगर कोई क्वेश्चन में अगर किसी को कुछ डाउट लगता है या मिसअंडरस्टैंड करते हैं तो क्लैरिफाई भी करेगा. So this is also again an easy method and a convenient method. Now what are the advantages of this method? The complete, correct and more relevant information can be obtained. We can get complete, correct and more relevant information we will get because we visit the place of the respondent, we ask a question and we ourselves write down the data. Then enumerators can get proper information by giving proper explanation. एन्यूमरेटर कैन गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई अगर क्वेश्चन में अगर मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करके प्रॉपर आंसर डिराइव करेंगे. देन इन दिस मेथड देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ क्वेश्चनर और इनकम्प्लीट आंसर. इन दिस मेथड देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ क्वेश्चनर और इनकम्प्लीट आंसर टू द क्वेश्चंस. मीन्स इसमें कोई क्वेश्चनर खो जाए, फट जाए, मिला ही नहीं, ये सब आंसर का तो कोई चांस ही नहीं रहेगा एंड कोई इनकम्प्लीट आंसर का भी चांस नहीं रहेगा. वाई? बिकॉज हम खुद ही उनसे पूछेंगे और जो भी वो रिप्लाई करेंगे वो हम खुद ही भरेंगे, इसलिए इनकम्प्लीट आंसर का भी कोई मतलब नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा और क्वेश्चनर खो गया, फट गया वगैरह वगैरह का भी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा. देन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन आर मोर रिलायबल information we can obtain because respondent himself provides data to us. Disadvantages: sometimes it is quite difficult to get expert enumerator in sufficient number. ये जो एन्यूमरेटर है समटाइम्स हमको मीन्स हमें 10 एन्यूमरेटर्स चाहिए बट वी आर गेटिंग ओनली 7, तो ये इनसफिशेंट नंबर हो गए, राइट. तो समटाइम्स हमें इनसफिशेंट एन्यूमरेटर मिलेंगे सो काम भी उतना ही देर लगेगी. ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ एन्यूमरेटर्स द रेम्यूनरेशन पेड टू एन्यूमरेटर्स इंक्रीजेज द लोकल कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी. नाउ व्हेन वी हैव लार्ज नंबर ऑफ एन्यूमरेटर्स, हमें 10 चाहिए थे, हमने 15 एंगेज कर दिए, राइट. तो 15 को हम सैलरी पे करेंगे, right? So that is also cost consuming. So enumerators increases the total cost of inquiry. So large number of enumerators also increases cost of inquiry. मतलब हमें वो खर्चा बढ़ाता है, right? Now आगे चल. Third, it is very difficult task to train the untrained enumerators for the inquiry.
even after training it is not proper to believe that they will work skillfully, honestly or efficiently. Now ये जो enumerator का task है that is very difficult. If it is untrained, if our enumerator is untrained, in that case he does not work properly, right? And even after training it is not proper to believe that, and even that enumerator requires training, we have provided training to him. Now in that case also we cannot rely upon that he works skillfully, honestly or efficiently, right? Next, this method becomes unsuitable when the respondents are spread over a wide area. This method becomes unsuitable when the respondents, मतलब हमें जो लोगों से इंक्वायरी निकालनी है, हमें जो लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, इफ़ दे आर स्प्रेडेड ओवर इन वाइड एरिया, मतलब वो जगह बहुत बड़ी है, सब लोग बहुत दूर दूर रहते हैं. नाउ इन दैट केस दिस कंज्यूम्स कॉस्ट एंड टाइम ऑल्सो. नेक्स्ट, enumerators have to adjust with the convenient time to respondents, or sometimes enumerators have to visit 2 or 3 times to the same respondents. As the result it becomes difficult to finish the inquiry within a stipulated time. अभी enumerators have to adjust the time also. If we are not able to meet respondents once, we have to visit his place twice, thrice also until we meet that respondent, right? So whenever we meet that respondent, then only we collect the data. So this is also time consuming, and we cannot able to complete our duty within stipulated period of time, and we cannot able to finish inquiry within time period. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 1 वीक का टाइम दिया है, बट लोग हमें मिल ही नहीं रहे हैं. 1 बार गए, 2 बार गए, तीसरी बार में मिले तो हम 1 वीक की जगह पे हमें 2 वीक लग गए काम ख़त्म करने में, राइट? ओके. सो अमॉन्ग these 3 methods of collecting primary data discussed earlier, there is no definite rules for the using a particular method. The selection of a method of inquiry mainly depends on the following aspects. मेथड हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही मेथड हम यूज़ करें. द डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी और क्वेश्चनर मेथड. बट सिलेक्शन ऑफ मेथड डिपेंड्स अपॉन स्प्रेड ऑफ द एरिया ऑफ द इंक्वायरी. जगह कितना बड़ा है, लोग कितने रहते हैं, द पर्पज़ ऑफ द इंक्वायरी, द मॉनेटरी प्रोविज़न, पैसे अवेलेबल है कि नहीं, जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें वो हमें इनफ हमें पैसे दे रही है या नहीं दे रही है, द टाइम फ्रेम, possibility of getting expert enumerators, and the standard of accuracy. All these 6 criteria that will matter for selection of a proper inquiry method, right? So primary data is over. So now from tomorrow I will start secondary data. So this your today's homework is write down method of questionnaire by post and questionnaire by enumerator, right? Okay.